Assalamu alaikum everyone. In our previous recorded lecture, we have discussed about the per unit system and we have discussed about the first chapter of the Turan Gunan, in which we have discussed that as an engineer, as a planner, what are the different requirements you have to see for the distribution side. So our this lecture is regarding the comparing the single phase and the three phase systems, because whenever you have to deal with the three phase and the single phase systems, the calculations are somehow confusing between the single phase and the three phase. So the purpose of today's lesson is to give you some comparison between the single phase and the three phase system. So first of all, there should be some interest approach for you in our today's lecture, that what are the does anyone have three-phase current at home or at work? What would be an indication of the three-phase current? So as I have told you in our introductory lecture as well, that no current at home or at work are of the three phase, all the domestic equipments are of the single phase. There should be some learning objectives for you in this lecture, that what are the different primary difference between the single phase and three phase current. Describe the advantages and the disadvantages of the three phase current as compared to the single phase current. Explain the differences between the delta connected, open connected, and the Y connected transformers and their resulting voltages. What are the different delta connected transformers, open delta connected transformers, and the Y connected transformers? So objective one, how is a three-phase current different from a single-phase current? The electrical service can be available in the single-phase current, or it can be available in the three-phase current. Many years ago, the single-phase current was sufficient to do the work that was necessary on the nearly all the forms. However, as the form size increased and the size of workloads of the electric motors increased, the single phase current was not enough to meet the load demand. So as a result, the three phase current at the local form level became a viable solution for the several forms. Whenever you are talking about the single phase current, the voltage rises to a peak in one direction of the flow, subsides to zero, reverses, rises to a peak in the opposite direction, subsides to zero, and so on. But the cycle repeats itself 50 times every second, which is where we get the term 50 cycle or 50 hertz alternating current. So the single phase current requires the use of one transformer. In case of three-phase current, the same pattern exists, except that there are three separate and distinct single-phase currents which are combined, so they can be transmitted over 3 or 4 wires. The three currents rise to a peak in one direction, subside, reverse, and so on. However, they do not peak at the same time. So you can say that each phase reaches its peak 120 degrees apart from each other. So the three-phase current requires 2 or 3 transformers. If you have to draw, you can say that this is like this. This is the single phase. It reaches to its peak value, subsides to zero, and then reaches to the maximum at the negative value. But whenever you are talking about the three phase, it is like this. For example, this is the single phase. Now, this is the second phase. And let's suppose this is the third phase.
आई कुड नॉट मेक इट एज एक्यूरेट, लेकिन बनाने का मकसद ये है कि एट एनी टाइम किसी एक फेज की ए, बी या सी, पर्पल, रेड और येलो, इन तीनों में से कोई एक फेज एक वक्त में पीक पे होगा। एंड यू कैन से दैट कि इसलिए आपके पास हर वक्त जब एक पीक पे रहेगा तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी ज्यादा होगा और ईएमएफ भी ज्यादा होगा। That's why the three-phase currents are more preferred, because the more change in the current, the more flux and the more EMF. और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी ज्यादा स्मूथ होगी क्योंकि फ्लक्चुएशन कम है, हर वक्त कोई ना कोई एक फेज आपका पीक पे है। So what are the some advantages and disadvantages of three-phase current as compared to the single-phase current? As with most choices, there are advantages and disadvantages that someone must consider. In order to choose the three-phase current, one must know that the advantages outweigh the disadvantages. Three-phase current offers a steadier source of power. जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक वक्त में कोई एक फेज आपका पीक में है, तो जो फ्लक्चुएशन है पॉजिटिव नेगेटिव की वो नहीं रहेगी, बल्कि कोई ना कोई एक फेज पीक पे रहेगा, even in positive or in negative peak. The magnetic force which causes the motor rotation is strongest when current flow is at its peak in the cycle. सिंगल फेज में तो पॉजिटिव पीक आती थी और नेगेटिव पीक आती थी, लेकिन चूंकि थ्री फेज है तो आपके पास जो रोटेशन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि आपके पास चेंज इन फ्लक्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा थ्री फेज। Single phase current peaks twice during one cycle, whereas three phase current peaks 6 times during one cycle. जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। So the three phase motors are simpler, cheaper to buy and maintain, and safer to use around the combustible materials since there is no sparking when they start. This is because three phase current allows a motor to be self-starting since it produces a rotating field of magnetism in the motor. इसका मतलब है कि आपको एक से ज्यादा फ्लक्स डिफरेंस की जरूरत होती है। यू नो दैट E is equal to N d phi by dt. This was the simplest formula for the Faraday's law of electromagnetic induction. Whenever there is some change in flux, the EMF will be generated. और अगर आपको थ्री फेज की बात करेंगे तो चेंज इन फ्लक्स आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए आपका ईएमएफ इजीली जनरेट हो सकता है। Now there should be some question in your mind that whenever I am saying that strong magnetic rotating field of magnetism is in the motor is required, तो आपकी जो घरों की मोटर्स होती हैं उसमें तो सिंगल फेज है, तो उसमें फिर कैसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है? तो क्वेश्चन लाइज इन द फिनोमेना ऑफ मल्टी फेजेस। कि आपने देखा है कि कभी आपका जो सीलिंग फैन है वो कभी वर्कआउट ना कर रहा हो, या स्टार्टिंग में अक्सर आपने देखा है कि अगर कैपेसिटर उसका खराब हो जाए तो वो रोटेट नहीं करता, या स्टार्टिंग में आपको विद द हेल्प ऑफ सम स्टिक रोटेट करवाना पड़ता है सीलिंग फैन को, उसके बाद वो रन करना स्टार्ट कर देता है। एक्चुअली व्हाट हैपेंड इन द सीलिंग फैन इज उसको स्टार्टिंग के लिए मल्टी फेज की जरूरत होती है, वो मल्टी फेज कैपेसिटर आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन कैपेसिटर जब आपका वर्कआउट ठीक नहीं कर रहा होता या उसमें कोई प्रॉब्लम होती है या खराब हो जाता है तो फिर वो स्टार्टिंग फेज उसको मल्टी फेज नहीं मिल रहे होते, तो वो फिर रोटेशन उसको विद हेल्प ऑफ सम स्टिक दे के उसको स्टार्ट करवाते हैं उसकी मोटर को, फिर वो स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह जो आपके पंपिंग वाटर पंपिंग मोटर्स हैं घरों की,
उसमें अगर आपको याद हो तो मशीन फंडामेंटल में एक आपने पोल शेडेड कंसेप्ट पढ़ा होगा कि हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ पोल्स है उसको उसकी जो वाइंडिंग ऐसे करते हैं कि हाफ जो उसका पोल होता है हाफ शेडेड होता है। जब हाफ शेडेड होता है तो फ्लक्स जो हाफ पोल में से पास आउट करता है, हाफ में से नहीं करता, तो उसकी वजह से जो आपका जो स्टार्टिंग में जो फ्लक्स है टेम्परेरी तौर पे वो मल्टीफ्लक्स पे कन्वर्ट हो जाता है। मल्टीफ्लक्स पे कन्वर्ट हो जाता है या डबल फ्लक्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस टू फेज ऑफ फ्लक्स भी आप उसे कहते हैं, तो उसमें जब कन्वर्ट हो जाता है तो इजीली आपकी मोटर स्टार्ट हो जाती है। So that's how you are temporarily converting your single phase flux into your multi-phase flux. So this eliminates the need for a separate starting winding. जैसा कि मैंने पहले कहा कि starting capacitor की जरूरत होती है सिंगल फेज में, या अगर आप कोई पोल शेडेड पोल यूज करते हैं ताकि आपका टेम्परेली सिंगल जो फेज आपकी मोटर्स हैं या मशीन है उसमें आपका जो फ्लक्स है टेम्परेली मल्टीफ्लक्स में कन्वर्ट हो जाए और ईएमएफ ज्यादा जनरेट हो और आपका स्टार्टिंग रोटेशन आपकी मैग्नेटिज्म इफेक्ट आपका प्रोड्यूस हो जाए मशीन में। तो अगर थ्री फेज की अगर बात करें तो उसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी फ्लक्स रोटेटिंग फील्ड ऑफ मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज हाउ you are eliminating the need for a separate starting winding. Three-phase motors are available in larger horsepower sizes than single-phase motors. जाहिर सी बात है कि हर 120 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है थ्री फेज के दरमियान नॉर्मली, और अगर हम इसे एज अ फेजर डायग्राम बनाना चाहें तो इट विल बी समवट लाइक दिस, लाइक द सीलिंग फैन के तीन पड़ों की तरह। कोई भी दो फेज हैं उसके दरमियान जो डिफरेंस होता है आपका पास कितना होता है, इट इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंड दिस इज योर लाइन टू लाइन फेज। और इसी तरह हर 120 डिग्री में आपके पास थ्री पीक्स आ रही हैं, तो इट मींस के लार्जर हॉर्स पावर और लार्जर टॉर्क आपको मिलेगा। So current is supplied to the motor with three conductors rather than two. This allowed the power supply to larger three-phase motors to be on the same size conductor as required for the smaller single-phase motors. A balanced three-phase, three-wire circuit with equal voltages uses 75% of the copper required for the conductors. क्योंकि जब थ्री फेज की आप बात करेंगे तो वोल्टेज लेवल आपका इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। जब इक्वल होगा तो उसमें न्यूट्रल की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आपके पास थ्री फेज वोल्टेजेस हैं एंड दे आर अनइक्वल, इट मींस दैट देयर इज सम रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रल सो दैट आपके जो वोल्टेज हैं वो अक्रॉस द थ्री फेजेस इक्वल रहे। आई डोंट नो कि इससे रिलेटेड आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है या नहीं किया। अगर आपने नहीं किया तो इंशाल्लाह ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। They supply a single phase two-wire circuit of the same capacity, voltage rating, length of the circuit, and the transmission efficiency. The three-phase motors are less expensive and usually lighter and smaller as compared to your single-phase motors of the same horsepower rating. So there is also a wider choice of enclosures available than for the single-phase motors. The three-phase current service is much more expensive to have as compared to your single-phase current at the local form. जाहिर सी बात है क्योंकि ज्यादा लाइंस आपको रिक्वायर्ड है, 3 ट्रांसफार्मर्स रिक्वायर्ड हैं वर्सेस 1 ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड फॉर द सिंगल फेज करंट, तो जाहिर सी बात है ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो व्हाट इज द जब हमने थ्री फेज की बात करेंगे, इट मींस दैट देयर कैन बी सम डेल्टा कनेक्शन एंड देयर कैन बी सम ओपन
delta connection and there can be some Y connection transformers. And how do the voltages differ between them? Let's see. अगर सिंपल हम डिस्ट्रीब्यूशन लेवल की बात करें तो इफ यू रिमेंबर कि हम एक डेल्टा की बात करते हैं, दिस इज योर डेल्टा एंड देयर कैन बी थ्री रेजिस्टेंसेस, sorry, there can be three resistances RA, RB and here there will be RC. इसी तरह हम Y कनेक्शन की बात करें तो इट इज नॉर्मली लाइक दिस, इसे उल्टा Y भी नॉर्मली कह देते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन साइड में ज्यादा आपके पास Y कनेक्शन यूज होता है। इसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि हेयर एट द कॉमन पॉइंट देयर विल बी सम न्यूट्रल। जैसा कि मैंने पहले कहा कि थ्री फेज में अगर आपकी अनइक्वल वोल्टेजेस हैं तो देयर शुड बी सम न्यूट्रल कंडक्टर एज वेल, कि आपका जो डिफरेंस इन करंट्स हैं वो न्यूट्रल में से पास कर जाए। एक एक्सपेरिमेंट में छोटा सा आपके लिए डिजाइन करता हूँ, उसमें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बात का पता चल जाएगा। अब इक्वल वोल्टेजेस होंगे फिर तो न्यूट्रल में से करंट कोई फ्लो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल इधर अगर आप कोई स्विच लगा देते हैं आगे ये, और इधर फॉर एग्जांपल स्विच ना लगाएं, आप एक बल्ब लगा दें, अगर आपके वोल्टेजेस अनइक्वल होंगे तो आप देखेंगे न्यूट्रल में से करंट फ्लो करेगा और ये बल्ब ग्लो करेगा। और अगर वोल्टेज आपके इक्वल हैं तो न्यूट्रल में से कोई आपका डिफरेंस करंट नहीं फ्लो करेगा। इट मींस दैट योर वोल्टेजेस आर सेम। सो कहानी में किधर से शुरू हुई कि whenever you are talking about some Y connection तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन लेवल में ज्यादा ये रिलायबल है। उसकी वजह ये है कि न्यूट्रल की वजह से आपके पास दो वोल्टेज लेवल मिल रहे हैं, वन इज बिटवीन लाइन टू न्यूट्रल एंड द अदर इज बिटवीन लाइन टू लाइन। लेकिन इसमें स्टार डेल्टा कनेक्शन में आपको सिर्फ लाइन टू लाइन वोल्टेजेस मिलते हैं। So let's see that what is difference between these connections in the transformers. A three-phase form installation requires at least three primary wires instead of two, and generally two or three transformers rather than one. So these transformers can be connected in many ways. फिर जब हम थ्री फेज की बात करेंगे तो there are three transformers. The three transformers have to interconnected with each other. तो वो कैसे हम कनेक्शन कर सकते हैं? Let's see. सबसे पहला डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर्स है, और एक नोटिफिकेशन आप नोट मैंने लिख दिया ऊपर, the voltages given here are not for the Pakistan system, these are for the European system. अगर डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर की बात करें, they require the three transformers. They are connected in a configuration resembling the Greek letter delta. If only 240 volt service is needed, one connection is made to each transformer. However, if 120 volt and 240 volt services are needed, one of the transformer is center tapped to provide the 120 volt service. जैसा कि ऑटो ट्रांसफार्मर में हम करते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर में आपके पास क्या होता है कि आपको पता है कि दिस इज नोन एज टैपिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, कि टर्न रेशियो को इंक्रीज एंड डिक्रीज करके आप वोल्टेज लेवल को इंक्रीज एंड डिक्रीज करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में। तो वो कहता है कि अगर आपको 120 वोल्ट रिक्वायर्ड है तो हम सेंटर टैप कर देते हैं, कि टैपिंग दरमियान में ले जाते हैं कि आपके जो वोल्टेजेस हैं वो हाफ हो जाए। The center tap is grounded and becomes the neutral wire for the regular wiring system. This is the delta connected transformer. You are seeing here that there are the three transformers, और आपको पता है कि जब भी आपने जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं उनके तीन अगर आपने कनेक्शंस करने हैं
So this is one neutral and they are connected with each other. This is as B terminal, this is as A terminal, and these two's common point is known as C terminal. So this is the transformer bank, and this is how you are getting the different phase levels here. The 240 volt three phase current is achieved by connecting A, B, and C. And the 240 volt single phase current is achieved by connecting A and B, B and C, or A and C. In order to achieve the 120 volt single phase current, connect A to N, neutral to phase current, और B to N भी आप कर सकते हैं, just like this. For example, this is A, this is B, so this is B, this is C, and this is A. Phase C is considered a wild or foreign phase and is not used with N as it will result only in 180 volt, 180 volt. So wire connected transformers requires 3 transformers. They are connected in a configuration that resembles the letter Y. This type of connection usually results in a 4 wire service. इसीलिए आपने देखा है कि अक्सर जो ट्रांसमिशन लाइन, अगर ट्रांसमिशन लाइन की हम बात करें जो डिस्ट्रीब्यूशन से पहले है, उसमें आपने 3 वायर सिस्टम है, लेकिन अक्सर आपने डिस्ट्रीब्यूशन साइड में 4 वायर सिस्टम भी देखा है, क्योंकि जब भी आप वायर कनेक्टेड ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो 4 वायर सर्विस होगी, 1 वायर being common to all transformers and grounded to form a neutral. जैसा कि मैंने पहले कहा, इक्वल वोल्टेजेस हो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनइक्वल वोल्टेजेस हो तो इट मींस दैट देयर शुड बी सम न्यूट्रल जो बाकी पॉइंट्स में तीनों फेजेस के वोल्टेजेस को इक्वल कर दे. The wire connection offers 120 and 208 volt currents. This is the Y connection. You are seeing here that this is 120 voltage और जो line to line voltage है वो 208 है. There can be different in different scenario. For example, पाकिस्तान में बात करें 240 voltage है single phase और line to line आपके पास 380 से 415 तक है. So this is जो how you connect the Y connection transformers. एक Y आप बना रहे हैं कि A, B और C को आपने सेपरेट रख लिया, उसके बाद आपने तीनों को कनेक्ट करके कॉमन को न्यूट्रल असाइन कर दिया. दिस इज द वाई ट्रांसफॉर्म. So this is the summarizing all. You have seen the primary difference between single phase and 3 phase current. We have described some advantages and disadvantages of the 3 phase current as compared to single phase current. We have explained the differences between the delta connected, open connected, and Y connected transformers and their resulting voltages. इसी तरह जब हम Y की बात करते हैं तो आपकी जो करंट है वो सेम रहती है, जबकि आपका लाइन टू न्यूट्रल और जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है उनके दरमियान डिफरेंस √3 की मल्टीप्लिकेशन से आ जाता है. For example, you can write here that your I per phase to neutral, या आप I phase का भी नाम दे देते हैं, it is equal to your I line. लेकिन जब वोल्टेज की बात करेंगे तो you can say that your voltage, line voltage will be equal to √3 times of your V phase. This is your V phase 120 और ये 208 आपका लाइन टू लाइन है. लेकिन जब आप बात करेंगे किसी भी डेल्टा कनेक्शन की तो उधर आपके पास
सिनेरियो डिफरेंट होगा। उसमें आप कह सकते हैं कि आपके जो लाइन वोल्टेजेस और फेज वोल्टेजेस हैं वो सिमिलर रहेंगे और आपकी जो लाइन करंट है इट विल बी अंडर रूट 3 times of your ICs. So this is the main difference between your delta connection and your star connection. Similarly, you can switch from your delta connection to your star connection, and you can switch from star connection to your delta connection as well. आई होप कि आप ये ऑलरेडी मशीन फंडामेंटल्स में पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इंशाल्लाह ये हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ऑनलाइन डिस्कशन मुझे याद करवा दीजिएगा। वी विल गो थ्रू दिस कन्वर्जन एज वेल। थैंक यू वेरी मच।